Okay, chalo, good evening, all of you. Let us start with the numericals from the magnetic field due to electric current, जो हमने last time देखा था. मुझे लगता है 3-4 numericals हमने solve किए थे already. So let us continue the same. I hope all of you have learned the formulae from this chapter. Yes, let us read the 5th question. Yes, देखो लिख से an alpha particle that is the nucleus of helium atom with the charge +2 is accelerated and moved in the vacuum tube with a kinetic energy of 10 megaelectron volts. It passes through the uniform magnetic field of 1.88 Tesla and traces a circular path of radius 24.6 centimeter. Obtain the mass of the alpha particle. Okay, and 1 electron volt का conversion जो है तो वो दिया हुआ है यहाँ पे, that is 1.6 into 10 raised to minus 19, which you already know, and charge on electron is also given here, that is about 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, so see here, whenever a charged particle enters into a magnetic field, we already seen this situation before in the theory, that whenever there is a magnetic field, suppose there is it is directed inwards into the plane of this diagram, and suppose a charged particle Q just enters into this magnetic field, it experiences a force due to it, and that force acts as a centripetal force which is necessary for its circular motion, and hence the particle revolves in the circular path, correct? And the radius of that circular path can be obtained just by equating the magnetic force and centripetal force. We can see, so magnetic force is nothing but QBB, which can be written to be equal to centripetal force, which is nothing but mv square upon r. So that here v gets cancelled from both sides, and we are left with the expression for radius, which already we have derived last time also, that is mv upon qb, correct? And using this equation, the particle is already given here, and magnetic field is also given, radius is also given. So we'll have to express this expression in terms of the kinetic energy. उतना Can we अच्छा do that? नहीं है। Yes. Okay, so let us try to express this in terms of the kinetic energy. Already we have proved that kinetic energy is given by the formula, that is q square b square r square upon 2m, correct? So r is also given, b is also given, q is also given. So we can just rearrange this formula so as to get this mass, that is q square r b square into r square, and that is divided by 2 times of kinetic energy, correct? And then we'll be just able to solve this further. Yes, so अब यहाँ पे जो भी दिया हुआ चीजें है तो वो इसमें डाल दो फटाफट. First of all, we'll just erase all these things which are unnecessary here. Okay, just take this here so that we can solve it further. Yes, so अभी चलो इसे ऐसे भी वैल्यू स्टार डाल दो यहाँ पे फटाफट, तो मास विल एक्चुअली बी मतलब एक्चुअली वो +2e है. ओके, तो इस q के बदले हमको क्या डालना है, q is going to be equal to +2e, okay, where e is going to be this,
1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा 2e और उसका होल स्क्वायर एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद b का होल स्क्वायर। b मतलब क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंडक्शन विच इज ऑलरेडी गिवन टू बी 1.88 हियर एंड उसका स्क्वायर एज इट इज एंड रेडियस जो है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे जो कि 24.6 दिया हुआ है। तो उसको हम 0.246 लिख सकते हैं बिकॉज वी वांट इट इन मीटर एंड उसको भी स्क्वायर करना है हमको and that is to be divided by this kinetic energy, 2 times of kinetic energy, whereas this kinetic energy is given in mega electron volt, right? So we can just replace it by that 10, but mega का मतलब क्या होता है, 10 raised to 6 होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 0.6 into 10 raised to minus 19 joule. So we can just replace it by that and get this as multiplied with 1.6 into joule. Okay, so this is the kinetic energy and we are going to get the mass using this formula here. तो अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा देखो ठीक से। yes, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा 2 का स्क्वायर क्या बन गया, वो 4 बन गया। ओके और e का स्क्वायर मतलब ही राइट, सो उसको हमको यहाँ पे 1.6 into 10 raised to minus 19 again multiplied with this 1.6 into 10 raised to 18. ओके ये हमने 2 बार लिखा क्योंकि उनको स्क्वायर करना है। बाकी 1.88 kept that is also repeated twice because we have to square it and at the same time yes 1.88 into 1.88 and that is multiplied with this 0.246 squared, उसको चाहिए तो स्क्वायर लिखेंगे हम। चलो ठीक है, अभी इसको डिवाइड करना है हमको, ये 2 10 raised to 6 into 10 मतलब ये वो 10 raised to 7 बन गया। ओके तो दिस इज 10 and that is multiplied with 1.6 into 10 raised to minus 19. Okay, so here we can see clearly that the 1.6 into 10 raised to minus 19 will just get cancelled numerator as well as in denominator. So what we are and even ये 2 जो है वो भी cancel हो जाएगा। देखो this 2 gets cancelled with this 4 leaving behind 2 here. So what we get finally is mass is equal to 2 into 1.6 which becomes 3.2 actually 3.2 into 1.8 उसका स्क्वायर 1.88 का स्क्वायर और into ये 0.246 का भी स्क्वायर and that is multiplied with सॉरी 10 का जो पावर है वो कितना बनेगा टोटल देखो ठीक से। तो यहाँ पे ऊपर minus 19 है और ये 7 ऊपर जाके 10 raised to minus 7 बनेगा तो 10 raised to minus 26 तो बनेगा इधर। तो ये 10 raised to minus 20 this is going to be gram, don't forget that. So that is the mass. Yeah, so just work this out. ये फटाफट कैलकुलेट करो कितना। Okay, just work this out. 1.88 multiplied with 1.88 again. Sir, 0.68. 0. 0.68. ठीक है मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। तो 0.246 into 0.246 again and multiplied with 3.2 correct 0.684 correct है ना 0.684 and that is multiplied with this 10 raised to minus 26 kilogram. Okay, and this can also be written as 6.84 into 10 raised to minus 27. Okay, which is there already in the answer. तो ये हमारा आंसर है।
6.62 आ रहा है उनका, हमारा 6.84 आ रहा है, तो इट्स ओके, कैन कंसीडर. जस्ट टेक द नेक्स्ट वन. Okay, see here, two wires shown in the figure are connected in series circuit, and the same amount of current, that is of 10 ampere, passes through both, but in opposite direction. The separation between the two wires is 8 millimeter. The length of AB is S. देखो डायग्राम में लिख रहा है यहाँ पे A से लेके B तक का जो लेंथ है तो वो दे रखा है, ये देखो ये डिस्टेंस दे रखा है उन्होंने, that is 22 centimeter, right? And obtain the direction and magnitude of the magnetic field due to the current in the wire 2. Okay, मतलब हमको वायर 2 के द्वारा जो प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है on the section AB on the wire of wire 1. Okay, मतलब हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन वायर 2 ऑन द सेक्शन AB ऑफ वायर 1, मतलब इस वायर 1 के AB सेक्शन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो हमको ढूंढ के निकालना है, राइट? और ऑल्सो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर 1. ओके, तो 1 वायर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा वो भी हमको ढूंढ के निकालना है. चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हमको ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है कि whenever there is a wire, then at a distance r from it, the magnetic induction is given by the formula mu naught I upon 2 pi r. करेक्ट है, ये फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी. So if we use this formula here for finding the magnetic induction at this point AB due to the current in the wire, हाँ wire 2, right? क्योंकि 2 वाले वायर की वजह से जो obtain the direction of and magnitude of magnetic induction due to the current in wire 2 on AB of wire 1. okay, तो देखो अब यहाँ पे इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमको r करके लेना पड़ेगा, राइट? एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन और नॉट, चेक. देखो सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स इज गिवन टू बी 8 मिलीमीटर, एंड तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 8 millimeter, करेक्ट है? But how much is this, so that we can find out this? और ऊपर से ये भी एक गड़बड़ हो रहा है, देखो यहाँ पे कि 8 मिलीमीटर ये दो वायर्स के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है, ओके, और length of AB is given to be 22 centimeter. ओके, तो मतलब AB यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है, नो डाउट, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मिलीमीटर है. एक्चुअली इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है? मैं आपको कंसेप्चुअली बता देता हूँ क्या क्या करना होगा. तो ये डिस्टेंस अगर हमको मिल जाए कैसे भी करके, ठीक है, तो या तो वो ऐसा हो सकता है कि ये पूरा डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, तो उसमें से अगर ये वाला डिस्टेंस जो हमको अगर दिया जाए तो उसमें से ये पूरे 8 में से हमने ये डिस्टेंस अगर काट लिया तो हमको ये बचा हुआ डिस्टेंस मिलेगा, ये r मिलेगा, और उसको यूज करके ही फिर हम मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r. ये फॉर्मूला यूज करके हम मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर का, राइट? और एट द सेम टाइम फोर्स कैसे निकालेंगे, उन्होंने फोर्स भी निकालने के लिए बोला है, फोर्स ऑन द वायर 1. ओके, टोटल फोर्स, हाउ विल फाइंड इट आउट? तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा जिसमें F इज इक्वल टू क्या होता है, दो वायर्स के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 L अपॉन 2 पाई r. ये फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए, बट दिस फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड ऑन द 3 पार्ट्स ऑफ द वायर. तो यहाँ पे 3 पार्ट्स बने हुए हैं, ये देखो यहाँ से लेके एक ये वाला पार्ट हो गया, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा पार्ट.
And by symmetry, we can understand that the first part and the third part will have the same length. So we can just find out the force on that part and just double it. Okay, एक पार्ट के ऊपर का फोर्स निकाल के उसको डबल करना है, और ये पार्ट के ऊपर का जो फोर्स है वो निकाल के उसको सिंगल रख के उसमें ऐड करना है, बस इतना ही हमको करना होगा। लेकिन अभी इसमें ये फर्स्ट जो हम फोर्स निकालेंगे, जो ये फर्स्ट वायर के ऊपर ये वाले पार्ट के ऊपर का जो फोर्स निकालेंगे, तो उसके लिए दो वायर्स के बीच में का जो डिस्टेंस है वो 8 मिलीमीटर का यूज करने का, राइट। और जब हम इस पार्ट के ऊपर ए बी पोर्शन के ऊपर जो फोर्स है वो जब निकालने जाएंगे, तो उसके लिए डिस्टेंस जो इन दोनों वायर्स के बीच में का ये आर के बराबर यूज करने का, ये वाला जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे डिस्टेंस करके यूज करने का उन दोनों के बीच में। ओके, और ये दोनों फोर्सेस, तीनों फोर्सेस निकालने के बाद इन तीनों को ऐड करना होगा, और दैट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द होल wire 1, and that will be repulsive obviously because the currents are in the opposite directions. We already seen in the theory that the opposite currents always repel each other. ये opposite currents हमेशा repel करते हैं एक दूसरे को, and the like currents always attract each other. Okay, तो ये हमने already prove करके रखा है, so it is no problem. So this is the tentative idea how to solve this question, but as the information here given here is incomplete, we cannot solve it completely because यहाँ पे S जो दिया हुआ है वो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नो डाउट। ये ए बी का लेंथ तो दिया है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है कि यहाँ पे ये दोनों वायर सेम लेंथ के हैं या ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो वो यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फाइनल आंसर निकालने में प्रॉब्लम आएगा। सो लेट अस लीव दिस एज इट इज हियर ओनली। आई विल जस्ट चेक एंड कम बैक, एक्सप्लेन इट टुमारो। तो अगर कुछ में कुछ क्वेश्चन में जो भी अगर गड़बड़ है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट करके मैं कल आपको उसको सॉल्व करके दूंगा। चलो ठीक है, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, just read this question fast. A very long straight wire carries a current of 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field at a distance 3.1 centimeter from the wire? Again, the same formula. B is actually equal to mu naught I upon 2 pi r. Okay, where mu naught can be written to be equal to 4 pi into 10 raised to minus 7, and I is current in the wire, which is 5.2, and 2 pi into r, that is the distance, which is going to be 3.1 centimeter, which can be converted into meter. So 3.1 into 10 raised to minus 2. So this 2 pi gets cancelled, and we are left with 2 into 5.2 upon 3.1 multiplied by 10 raised to minus 5, and this can be solved further. So we can say this will be 10.4 upon 3.1 into 10 raised to minus 5 Tesla, which is going to be, again it's wrong. Okay, let us see the next one. Current of equal magnitudes flow through two long parallel wires having separation 1.3 centimeter. If the force per unit length on each of the wires is given, what is the I? Okay, so see here, when two wires are kept parallel to each other, the force of attraction or repulsion between them is given by the formula F is equal to mu naught I1 I2 into L अपॉन 2 पाई r। करेक्ट है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। बट अभी जबकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इक्वल मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 is going to be same as I2, करेक्ट है, which can be called as I only. So no need to take it as I1 I2, we can just call it as I only. And force per unit length के बारे में बात की है यहाँ पे, देखो force per unit length,
जिसका मतलब F अपॉन L होता है। तो ये L को क्या करना है, हमको नीचे लेके जाना है, इधर फोर्स के नीचे डिनोमिनेटर में। तो इससे हमको ये मिल जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज F अपॉन L, विच इज ऑलरेडी गिवन हियर। तो ये F अपॉन L का ही वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो दिया है ना, ये F अपॉन L का वैल्यू दिया है एक्चुअली, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I स्क्वायर upon 2 pi into r as it is, so that we can just rearrange this equation for I square. तो I square के लिए अगर हम इसको rearrange करेंगे ना, तो I square का वैल्यू क्या बनेगा, देखो ठीक से, तो वो बनेगा 2 pi r into, अच्छा ऐसा करेंगे सबसे पहले ना, ये जो F अपॉन L है उसको हम स्मॉल f लिख देंगे, चलेगा। स्मॉल f stands for force per unit length, which is a single quantity here. So mu naught into I square as it is upon 2 pi r kept as it is. And then just take this 2 pi r in that side so as to get this I square equal to 2 pi r into small f, and that is divided by mu naught, right? And then I can be written to be equal to root of this whole thing, that is 2 pi r f upon mu naught. And then we can just replace all these values here, so that we get this as 2 pi kept as it is into r, which is the radius of this coil wire, which is 1.35 centimeter, okay, which can be converted into meter by multiplying it by 10 raised to minus 2. So 1.35 into 10 raised to minus 2, and again frequency f जो है force per unit length, that is also given here, which is 4.76 into 10 raised to minus 2, okay, and that is to be divided by mu naught, which is going to be 4 pi into 10 raised to minus 7, okay. So this 2 pi gets cancelled with 4 pi and leaves 2 behind, and also this 2 can be reduced with this 4 here, so as to left with 2 point, यहाँ पे क्या आएगा 2.38, correct है, yes. So we can get this in the next step. I is equal to root of, what is this, 1.35 into 2.38, and that is multiplied with 10 का पावर कितना आएगा, देखो ठीक से पूरा कैलकुलेट करो। तो ये 10 raised to minus 2, ये 10 raised to minus 2, और ये बन गया 10 raised to minus 4, और ये नीचे का 10 raised to minus 7 ऊपर जाके 10 raised to plus 7, and 7 minus 4 becomes 10 raised to 3 only, and hence we can say this will be 10 raised to 3 here, okay. So we have to just take the square root of this. So let us do one thing, ये जो है 10 raised to 3 को split करके 10 और 10 raised to 2 लिख देंगे, और ये 10 जो है वो इसके अंदर डाल देंगे, तो वो बन जाएगा 13.5, and that is multiplied with 2.838 into 10 raised to 2, right? And then just take this product of these two numbers by using the log table. It will be actually 13.5 multiplied with 2.38, which is going to be 32.13, right? So this is 32.13, and that is to be multiplied with 10 raised to 2. So अभी इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल के लो फटाफट। It comes out to be 5.668, right? Into 10 raised to 2 का square root, simply 10. So finally we are going to get it as 56.68, and that is going to be in ampere. Yes, 56.7 approximately. Okay, so we have seen some numericals in this chapter today. So let us continue the same
in the next lecture tomorrow. So let us stop here. Okay.